वो दिख रहा था मुझे. Hello everyone, this is Shivani. Good afternoon you all. Welcome to our channel Schoolful Academy. उस लिंक पे जा रहा हूँ और वो वीडियो चली खाना आ गया Start कर दूँ? शुरू किया ही बच्चे जो है 2 मिनट और वेट कर लेते हैं जब तक हो जाए. ये बच्चे मैसेज आया है 2 आए हैं सुखना में अमित शुक्ला. Starting से बोलूँ. Good afternoon you all. चलो आज शुरू करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10 का चैप्टर 6 that is life process. As you all know, this is very important chapter because it deals with all the life aspects like growth, respiration, development, excretion, whatever the activities that are taking place in our daily life. जैसे हमारी regular activities, nutrition है, growth, development, excretion and everything. It deals with all the kind of the basic activities and that are very important for our life. क्या आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज में? As I can see, many of you are online here. Somebody is asking my name. This is Shivani here. Okay, now see respiration. Respiration is there. Growth, development, metabolic activities, excretion, and one more is digestion. So all these are the activities that will be included in life process. Basic activities जो हम अपनी regular life process में करते हैं, जैसे respiration, it is very important for taking in oxygen. Growth is important for the development of the organs, and digestion for the breakdown of the complex substance into the simpler ones. कोई भी चीज, कोई भी आपका मटेरियल, फूड मटेरियल जो आप इनटेक करते हैं, वो एज इट इज कभी भी नहीं डाइजेस्ट होता है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमेशा सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके उनका सिंथेसिस होता है, एंड वी आर गोइंग टू टेक देम एज अ digestion. Now development is what? Development of all the organs as per as your body. Next is your metabolic activities, means physiological chemical activities that are taking place inside your body. Another one is excretion. Remove out all the toxic substance, toxic waste or the substances that are present inside your body. That is known as the excretion.
removal of the toxic substance out of your body. Now next, nutrition. Nutrition, what is nutrition? Nutrition is, it is derived, nutrition is derived from the word nutrients. From the word that is nutrients. Nutrients can be your organic as well as inorganic, both. And it is very important basic necessity of human life for development. न्यूट्रिशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं वो इसके बिना क्या है? इम्पॉसिबल है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपका सबसे बेसिक चीज है कि वेदर वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एवरीबडी दोज हु आर लिविंग, कोई भी चीज अगर लिविंग कंसिडर करी जा रही है तो बिना न्यूट्रिशन के वो केपेबल नहीं है. न्यूट्रिशन इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर द डेवलपमेंट. Okay, now next in this we will have the modes of the nutrition. Nutrition can be derived from the word that is nutrient, and then it is what? It is the basic necessity for the human's life for the development. Next we will study about the two type of the nutrients. Two type of the nutrients are like types of nutrients. Types of nutrition. One is, everyone is familiar with this word, autotrophs. सभी कॉमन टर्म है, आप सबने ऑलरेडी ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स. This is heterotrophs. Autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are what? Auto means self. Auto means self. And trophs means nutrition. From this you can get an identification of what I am talking about. Autotrophs means the organisms or the plants which can make their own food by using the raw materials. See, they are not taking any of the raw materials from, they are only using the natural things like sunlight is there, water and carbon dioxide that is present in the environment only. So they are preparing their own food. That is why auto means self, trophs means nutrition. They are capable of making their own food. Okay, for example, all green plants. All green plants. ठीक है, for the example is all green plants. Types of nutrition, that is of two different type. One is autotrophs. Auto means self, trophs means nutrition. Example like all green plants. Okay, this is autotrophs. It means they can take the raw materials from the environment and they can prepare their own food by themselves only. But when we talk about heterotrophs including humans as well as the animals only. Why including humans? Because humans are taking the product, they are dependent on plants as well as animal. वो क्या है, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स पे अपने रॉ मटेरियल्स के लिए. Then they are taking the raw materials from plants and animals, then using their raw materials to prepare their food. They are cooking their food, but the raw materials are coming from where? Only the plants and the animals. ठीक है, जितना भी raw materials है वो कहाँ से आ रहा है? आपका प्लांट और एनिमल से ही सारे रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, तब हम ह्यूमन बींग्स उसको कुक करके यूटिलाइज कर रहे हैं. तो दैट मींस वी आर हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, क्लियर? हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो मींस
heterotrophs. Hetero means depends, or troph means nutrition. See, they can depend for their nutrition on plants and animals. Okay, they are dependent. They are dependent on plants and animals for the raw materials. They are dependent on plants and animals for the raw material. Then they are capable of preparing their food. That are the heterotrophs. For example, you can say human and all animals. Example is humans and animals, including all animals. This is what? This is heterotrophs. It means they can prepare their own food, but they are dependent on somebody to take the raw materials. And when we talk about the autotrophs, they are not dependent on anyone. They are collecting the raw materials from the environment only and preparing their food for themselves. That are autotrophs. So these can also be considered as the mode of nutrition. इसको एक और चीज भी बोल सकते हैं जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Modes of nutrition. That will be same. Modes of nutrition. Autotrophs as well as heterotrophs. Now, moving further, we will be discussing about the nutrition in plants. Nutrition in plants. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स. एज वी ऑल नो दे आर ऑटोट्रॉफ्स. सबसे पहली चीज वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है. ऑटोट्रॉफ्स आप जानते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा. ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक. ऑटोट्रॉफ्स क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट. इट मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब प्लांट्स में बात करते हैं स्टार्टिंग से. सबसे पहले दिस इज नोन एज व्हाट? फूड फैक्ट्री. फूड फैक्ट्री सबसे बेसिक चीज है. प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कैसे करता है प्लांट? लीफ से. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीफ एक ऐसा पार्ट है जहां से प्लांट अपना खाना बनाता है. बट लीफ में भी कई सारे पार्ट्स है. लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉफ्स. इन दिस अ प्रोसेस कम्स लाइक फोटोसिंथेसिस. This is the process through which photosynthesis is what? It is the process through which green plants prepare their own food using the raw materials like sunlight, water. Okay. See, nutrition. In nutrition in plants, we were discussing about photosynthesis.
photosynthesis. It is what? It is a process in which plant is going to use raw materials. Raw materials. At the end of the video, I will share you the PDF. Okay, I will share you the link for the PDF. You can have all the notes from there only. Okay, nutrition in plant, it deals with the photosynthesis. It is what? It is a process in which plant use raw materials like water, carbon dioxide, and in the presence of sunlight. As you all know, sunlight is the ultimate source of energy. In the presence of sunlight and chlorophyll. I'll explain you about the chlorophyll also. Chlorophyll क्या है? It is the important part. Okay. These are the raw materials that can be taken by the plants in order to perform this activity, that is photosynthesis. Okay. And we can represent, हम यही photosynthesis को हम represent कर सकते हैं chemical equation के form में भी. For example, like CO2 plus H2O in the presence of sunlight and the green pigment, that is chlorophyll, and that will give you out what? C6H12 and O6 plus oxygen and H2O. H2O is what? It is the excess water that can be removed outside the plant in the form of the transpiration. Okay, this can be represented in the chemical formation, chemical equation also. Carbon dioxide or water that are going to react in the presence of sunlight as well as chlorophyll, and they will form the substance that is glucose. ठीक है? Glucose बनता है. This is what? Glucose. And oxygen, which human are using that as a basic ingredient for the making of the food. And this is what? Hydrogen. Hydrogen is what? Water. Water that is going to remove water is removed out of the plant in the form of water droplets. And this process is known as what? Transpiration. ये क्या आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है, जिसमें वाटर लॉस होता है. प्लांट से अगर जो भी वाटर लॉस हो रहा है, ठीक, पहले क्या हुआ, ये फोटोसिंथेसिस होती है, एक बेसिक प्रोसेस, ठीक, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल रहता है. क्लोरोफिल क्या आपका एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से इट इज अपियरिंग एज अ ग्रीन टू एवरीवन. ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है. अब ये क्या है, रॉ मटेरियल्स. तो आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट से मिल जाती है, water they can absorb from the roots, from the ground. Okay. Presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll plant के पास already है. Sunlight आपका ultimate source of energy. ठीक, उनकी presence में ये बनाता है glucose, that is C6H12O6. यही ग्लूकोज वो यूटिलाइज करता है, बट कुछ अमाउंट में अगर उनका जो भी फूड मटेरियल है वो अगर बच जाता है तो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. तो प्लांट्स का जो स्टोर्ड फूड है, प्लांट्स का जितना भी स्टोर्ड फूड है, अगर कोई भी पूछेगा प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या बोलेंगे हम उसको. प्लांट का स्टोर्ड फूड है जो भी किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता. ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है, एग्जैक्टली वो तुरंत ही यूटिलाइज कर लेते हैं. फिर आपका बनता है ऑक्सीजन, जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग प्लांट एज अ लंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये जो ऑक्सीजन ही एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है. H2O भी और प्लांट्स के बाहर रिलीज हो जाता है, बट उसके लिए एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ये प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जितना भी एक्सेस वाटर है प्लांट में वो
प्लांट में जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ये के बाहर निकल जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. Excess water loss from the plant is known as transpiration. Now I'll show you the structure for the leaf. This is the structure. This is the leaf. Here you can see this is petiole. This is known as midrib. Here veins are there. Here veins. यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. सबको पता चल रहा होगा छोटे छोटे पोर्स क्या कहलाते हैं. These are the tiny pores known as stomata. स्टोमेटा. अब स्टोमेटा को हम सिंगुलर में स्टोमा बोलते हैं, and in plural it is known as stomata. Clear? And this is what leaf margin. Here in the stomata, see, stomata are present where every time they are present at the lower surface of the leaf. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के लोअर सरफेस पे. मैक्सिमम स्टोमेटा एक मिनट लग जा maximum stomata are present at the lower surface of the leaf. Now we will see the structure of the stomata. ये अगर हम ये छोटे छोटे जो माइन्यूट पोर्स है उनको हम माइन्यूट पोर्स भी कहते हैं. ये जो माइन्यूट पोर्स है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, if we are going to observe these pores under the microscope, we will observe these kinds of the structure, and these are nothing just the stomata. Can you see this stomata? Two types of stomata are there. Comment me everyone. What are the two types of the stomata? I can see many of you are online here. बहुत सारे लोग हैं. Okay. Now stomata are of two types. One is open and another one is closed. This is open. Closed stomata. This is the structure for the closed type of stomata. A nucleus is there, and these are what? Chloroplast. The structure of the stomata. Two types of stomata are there, open and closed. This is what these are, two guard cells. These are chloroplast. Chloroplast are what? Green pigment through which the plants can prepare their food. This is stomatal pore.
stomatal pore. Same thing is here only. Guard cells, chloroplast, and here pore is closed. Stomatal pore. These are the tiny pores. दोबारा बंद कर